Assalamu alaikum ji. My name is Aurangzeb Siddiqui. I work at TPL Insurance. I head the FIG sales and retail sales division. मुझे सिस्टम लगाए मेरे ख्याल ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है. My system is a 12.2 kilowatt hybrid system and that's what I have on the panels as well. So I'll be honest with you, the reason why I chose Voltaic Power was because I did go around in the market and did some research and I went with Voltaic. I'm actually very happy that I did. The team was very helpful actually because I'm a bit of an aware customer, तो मैं बहुत ज़्यादा सवालात भी पूछता हूँ चीज़ें करने से पहले. So I did my research, I checked online, I checked the reviews, I checked the SunGrow के बारे में जाके बहुत सारी रिसर्च की और मैंने देखा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है और उसकी आफ्टर मार्केट सेल्स कैसी है, वारंटी पीरियड्स कैसे हैं, बाकी सारी चीज़ें. So the team was actually with me throughout, not just the sales team, but I was in touch with the operations team. फिर उनके engineers मेरे घर पे आए. So I think moving towards solar makes sense because if this is how things are going to continue going, then honestly speaking, it's a no-brainer. Because जिस तरीके से आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं पेट्रोल बचाने के लिए, अगर आप उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कम हो जाती है, आप you're moving towards more and more efficient appliances at home. Given the technology with long warranty periods, 10-20 साल सिस्टम्स चलते हैं, उसके ऊपर कोई इतने खास मसले मसाइल नहीं है. आप सिस्टम को बचाने के लिए साथ उसकी इंश्योरेंस भी ले सकते हैं. So I mean, given all these things, it makes sense for you to probably go into solar and save that cost and upgrade your lifestyle in other ways. I definitely think it was probably the best choice for me at the time because बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मुझसे पहले solar systems लगवाए अपने घरों में, उन्होंने non-hybrid लगाया था. Going forward, there is a very strong possibility that the buyback rates from the government and NETPRA etc. are going to reduce. So it would be smart to get a hybrid system. शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा invest कर लें and then over a period of time जब आपका payback हो जाएगा, you can always add batteries and ultimately go off grid if need be. My bill has come down to minus actually. वैसे कुछ जगहों पे कुछ महीनों में तो मुझे माइनस में बिल हुआ है, so वो देख के तो ज़ाहिर है बड़ी खुशी हुई मुझे. कुछ जगहों पे थोड़ा सा ऊपर भी था, but if I calculated on an average annual basis, I'm pretty sure I'm somewhere very close to zero. So I think after sales is fantastic too. बहुत ही मतलब अभी तक तो अच्छी है. दो तीन चीज़ें जो मुझे कम से कम फील हुई थी कि when their engineers came, जब उन्होंने मुझे बताया कि उसकी अर्थिंग कहाँ पे होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, सिस्टम को मेक श्योर करे कि लॉन्ग लास्ट कैसे हो, उसकी मेंटेनेंस कैसी होनी चाहिए, उसकी सफाई कैसी होनी चाहिए. For example, the cleaning team comes over and they do a fantastic job with the cleaning. They keep you informed, they send you videos. So without me having to get involved in this entire process, मुझे लगता है कि वो आके अपनी सारी चीज़ें करते हैं. The team at Voltaic had kept me informed throughout the entire process. And then उसके बाद जब एक मेरा अकाउंट उन्होंने जनरेट किया था जो कि के इलेक्ट्रिक पे essentially जब एप्लीकेशन जाती है, so every time there was a new requirement or any time that they needed something, I was informed. तो मुझे email भी आती थी. So I would recommend कि whether it's Voltaic or any other individual or any other organization, अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बेशुमार है, आप रेप्यूटेड डीलर से ही या डिस्ट्रीब्यूटर से या इंस्टॉलर से ही काम करवाएं. Because I think the kind of thought process and the operation system that goes into place, you probably spend somewhere around 2-3 million rupees on your solar installation. So obviously इतने पैसे आप खर्च करने तो 2-4-50,000, it does not really matter in the grand scheme of things. So I would highly recommend you go with a reputed dealer that comes with warranty, with after sales service, puts proper cabling, fire hazard वगैरह बाद में खुदा न खास्ता इस तरह की भी चीज़ें जो है वो बचत हो सकती है. So yes, I do plan to expand my system and for that I will use Voltaic because all the equipment that I've used is SunGrow, so I would ideally like to get that battery too. And as far as recommending it to other people if concerned, I already have done that. तो दो दोस्तों ने मेरा ही सिस्टम देख के घर पे लगवा लिया and बाकी लोगों को भी मैं encourage करूँगा कि यही इस्तेमाल करें. उसकी वजह ये है कि I've not just my satisfaction, but I think when you see the system and the way it's installed and the way they recommend the entire process, तो I think आप लोग भी खुद ही डिसीजन लेने में आसानी होगी आपकी.